cute. Love from Assam. Thank you. Yes. Urfi's party. I did go to Urfi's party. It was fun. I met everyone in Urfi's party. अलग बात यह है कि मैं उर्फी या किसी और के पार्टी में जाके ना आई डोंट लुक फॉर ड्रामा. आई डोंट गो देयर टू क्रिएट मोर कलेश. एट द एंड ऑफ द डे बस शो हो गया गाइस. देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग. And if you see most people who are fighting, if you see people who are going on live and taking other people's names, if you see people who are going on Instagram and taking anyone else's name, ये समझो कि it is a desperate attempt to keep themselves relevant. That's it. ये शो का फॉर्मेट है और ये शो का फॉर्मेट है क्योंकि प्रीवियस सीजन के लोगों ने भी यही किया था. That's exactly what it is. It is इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. We finished the show. शो से बाहर आने के बाद एज द एपिसोड्स कीप एयरिंग, जब भी झगड़ा होता है सब लोग लाइव आते हैं, लाइव आके वापस वही झगड़ा को शुरू करते हैं. सो इट्स फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव द बेस्ट एग्जाम्पल. 2000 लोग हैं. माय गॉड दिस इज कैरी. एनीवेज आई गिव यू ऑल एन एग्जाम्पल. नाउ यू सॉ द फाइट दैट मी एंड मोहित हैड यस्टरडे, करेक्ट? दिस फाइट हैज हैपेंड अ लॉन्ग टाइम बैक. उस टाइम पे वट एवर आई हैव सेड आई मेंट एवरी बिट ऑफ इट. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग बैक. ओके, couple of reasons. One, क्योंकि हम शो कर रहे थे, दोनों का पहला रियलिटी शो था and things are happening in front of our eyes. Situations ऐसे turn out हो गया कि even I felt betrayed a little bit in the dome session. Not a little bit, a lot in fact. मैं किसी और से expectation रखता ही नहीं हूँ, that is one thing. और मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे उसके अंदर technically at that point of time. सब लोग अपने alliances बना के खेल रहे थे. My only source of support was Mohit, believe it or not. And Mohit starting से मेरा दोस्त है, so हम हमेशा बात करते थे इसके बारे में. बुरा लगा couple of things. एक तो जब ये immunity की बात हुई थी अनुष्का के साथ, this I have actually told in front of Mohit and अनुष्का, दोनों को मैंने जाके बोला था, guys मेरे को manipulation आता नहीं है. I don't know how to play the game. Honestly बता रहा हूँ, I have no idea how to play the game. It took me a while to figure out what was happening in the game. Because I'm not used to it. So when I came up with this brilliant plan कि ये काम करते हैं, तो मेरा ऐसा ही सोचता कि I'll do something. During the dome session हमें पता था कि somewhere or the other we got to know that there were two people who were going to be targets. It was either Mohit who was going to go out or I was going to go out in the boys. Target कैसे पता चलता है? Because alliances के बीच में meetings होता है, and then if you're not part of any alliance, then you know essentially you are either being a vote bank या तुम्हें निकाल देंगे शो से, in-house voting के हिसाब से. So we found out that day ऐसे बातें करके कि we were the targets. Somewhere along the way I thought it would be a nice idea if you know, मैं भी ऐसे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोच रहा था कि शायद अगर ऐसे सोचो आइडियल सिनारियो, सब लोग रॉन वोट आउट कर दे ऐसे लिख के ऑन द प्लग कार्ड, एंड देन फाइनली अनुष्का इज लाइक आई एम गिविंग इम्यूनिटी टू रॉन, तो क्या होगा? होल स्टोरी चेंज. दैट वाज द प्लान. आई स्पोक टू एक्चुअली बोथ ऑफ देम अबाउट इट, बट मुझे ऐसा लगा कि मे बी नहीं, एट द एंड ऑफ द डे सबका इंडिविजुअल गेम होता है. सो व्हेन आई सेड दैट आई थिंक दे गॉट ऑफेंडेड. गलत बात ये थी कि दे नेवर स्पोक टू मी अबाउट इट, दे डायरेक्टली टेक इट डायरेक्टली इन द डोम सेशन. और हाँ, कोट की बात जब हुई, कपड़ों की बात जब हुई, लेट मी क्लियर दिस आउट वन सिंपल थिंग गाइस. मैं इतना चीप नहीं हूँ कि मैं जाके बोलूँगा कि मैंने इसको कपड़ा दिया इसीलिए ये सब चीज़ें. मैं बोलने की ये कोशिश कर रहा था कि वो मेरा भाई है. आई एम अ सिंगल चाइल्ड, ओके. आई हैव नॉट ग्रोन अप विद सिबलिंग्स अराउंड मी, एंड व्हेन यू आर डूइंग अ रियलिटी शो, समवन लाइक मी स्पेशली, मैंने बहुत मेहनत लगा के आई हैव पैक्ड सम ऑफ दीज क्लोथ्स एंड कम फॉर द शो बिकॉज आई वांट टू वेयर देम. अगर मैंने ये सब डिसाइड किया है एंड आई हैव पैक्ड अकॉर्डिंगली टू दीज मेनी डेज, उसमें एक दो कपड़ा मैंने दिया है मोहित को, इट इज़ बिकॉज आई कंसिडर हिम अ ब्रदर. दैट इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. मेरे लिए ऐसा लगा था कि तू मेरा भाई है, तेरे को मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कुछ भी चलेगा. एंड आई यूज्ड टू वेयर मोहित जैकेट ऑल द टाइम. वहाँ पर एक रेड कलर का जैकेट देखा होगा, पुल ओवर, दैट वाज आल्सो मोहिट्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. वो भी प्यार विला में मैं ही पहन रहा था. इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक काइंड ऑफ थिंग. नॉर्मल चीज़ है ना, भाइयों के बीच में ऐसा होता है, शेयर योर क्लोथ्स एंड स्टफ. द रीजन दैट केम आउट वाज बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि डूड, आई एम कंसिडरिंग यू वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल हियर. हर चीज़ के बारे में अगर कुछ भी दिक्कत हो जाए, कमेंट टॉक टू यू एंड आस्क यू कि ब्रो क्या करना है, क्या सिचुएशन है. एंड देन व्हेन दिस हैपेंड, दैट वाज माय रिएक्शन टू इट. दैट्स एसेंशियली व्हाट आई डिड एंड सेड.
Did it come off as cheap? Yes, it did. Will I apologize for it? Yes, I definitely will. I don't mind. मेरे को ऐसे शर्मनाक की बात नहीं है. Again, like I said, guys, stressful situation. Don't. Of course, it was cheap to say. I know it was cheap to say. That's exactly why I'm addressing it. When I saw it on the clips also, I didn't feel very happy about it, ना. And if you notice, मैं stories पे भी ज़्यादा इसको promote नहीं कर रहा हूँ. मैंने कुछ नहीं डाला है where I am actually fighting with Mohit. I've just put an edit जहाँ पर मैं अच्छा दिख रहा हूँ झगड़ा करते हुए. That's it. Otherwise, darling, I understand the situation. मुझे एक चीज़ तो पता है कि देखो, at the end of the day, it is a survival game. Even he needed to survive, even I need to survive. He picked his connection. जो अनुष्का ने बोला होगा वही किया है उसने. Makes sense. Fine. What can you do? बुरा लगा मेरे को. So I said some things that maybe I didn't mean to say. Or maybe I did mean to say. But I said it regardless. And अभी 2 महीने के बाद people are discussing whether it is cheap or not cheap. I will tell you personally, it was a little cheap. And I apologize for that. But it's okay, guys. It's fine. I think Mohit is also pretty fine with that. I'm spoken to Mohit. So ठीक है. Don't stress. As long as Mohit is not feeling offended by it, as long as Mohit को कुछ बुरा नहीं लग रहा है, I don't think it should matter that much. You know? And he's been decent about it. He's not said anything. He's not done anything regarding the same. लॉन्डो के बीच में यही चलता है, dude. It's the problem is the girls from the villa. Because every other day I open my Instagram and I'm seeing someone or the other has some hate to say about me. क्या कर सकते हैं? चुपचाप बैठने का एक डिसएडवांटेज यही होता है. I don't want to get into trouble. I don't want to get into drama. But unfortunately, silence is taken as you being wrong. Okay, wait. बहुत सारे बड़े questions हो गए. रुक जाओ guys. Why do you guys dislike Anushka so much? Okay, I'll tell you why I disliked Anushka so much. Let's be very open with this. I can honestly tell you. Anushka has 2 personalities, okay? Camera के सामने Anushka becomes a different person. Normally Anushka is a very different person. Normally Anushka is very sweet, very nice, very understanding. Someone who's capable of having a good conversation. उसके साथ जाके बैठ के बात करोगे, she'll understand what is happening. She will give you valid inputs. Camera शुरू होते ही there is another personality that comes out, and that I never liked. And I've told that to her on her face. I think you can ask Anushka as well. It's very simple. If I don't like something about you, I'll say it to you on your face. That's the difference, guys. मैं स्टोरीज पे नहीं डालता हूँ ये सब चीजें, मैं बोलता हूँ सीधा. You're adults, dude. बच्चों की जैसा ऑनलाइन आके फाइट करने का कोई शौक नहीं है मुझे, है ना? Please reply to me, sir. Yes, Angie, I've replied to you. You are my biggest fan. Wow. Thank you so much for that. अस्मिता के साथ क्या सीन है ब्रो? कुछ सीन नहीं है ब्रो, चिल है. मैं अस्मिता को दोस्त मानता हूँ. परसों पार्टी में मिला था, थोड़ी बहुत बातें हो गई बस. वो अपनी कर रही है, मैं अपना कर रहा हूँ. स्प्लिट्सुला में खाना भी बनाना पड़ता था क्या? नहीं, खाना मिलता था हमें. नो, एब्सोल्युटली नॉट. खाना मिलता था, बेड था सोने के लिए, सब फैसिलिटीज थे, वॉशरूम भी थे. फनी. Did you really like Asmita? Yes, I did. I liked Asmita a lot on the show. That is why I was doing whatever I was doing. Now when I look back at it, when I see these episodes, मुझे खुद ऐसा cringe लगता है. But it is what it is, dude. Correct. खाना देते हैं इसलिए तो फ्री में इतना ड्रामा करते हैं. True people, true. संयुक्ता हेगड़े with that dialogue. सही है ब्रो. थोड़ा मेरे को भी ऐसे सिखा दे कि ऐसे 4-5 डायलॉग कैसे मारता है. करने के लिए और कुछ नहीं है. यस, कुछ नहीं होता. यस, ड्रामा ही करना पड़ता है. That is why you don't see me a lot in the episodes, by the way, guys. मैं घुसता नहीं हूँ चीजों के अंदर. घुसूंगा ना तो तब भी हेट ही मिलेगा. There was one instance. When was this happening? Remember that episode where Sadaf and Anushka had the fight, and then it was depending on the clothes, throwing the clothes and all those things. वहाँ पर भी I woke up one day and I saw there was some hate reel about me saying how did you let your whole gang bully Anushka, and I'm just like, एक तो मेरा गैंग तो था नहीं,
I was not part of any gang. I was friends with all of them, and they decided to do this while I stood and watched. Now, if I'm going to stand and watch, might as well laugh about it. That's it. I didn't have any inputs. मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था. When is my birthday, Ron? My birthday is on the 3rd of June, guys. Am I dating Simran? No, I'm not dating Simran. But Simran's a very good friend of mine. Possibly one of the closest friends I've had since the show. Simran is someone I enjoy hanging out with. Why don't you fix things with Asmita? What is there to fix? Okay, you know what? If you're going to say it, might as well say it. You all, तुम लोग सबके Instagram accounts को follow करते होंगे. You would have seen what people are saying. But, since the show has come out, I have not said anything negative about Asmita. I have not bothered saying anything negative. I have not promoted anything negative either. The disappointing fact was जब मैं ऐसा इसको respectfully treat कर रहा था, I have seen this one thing that she still had the audacity to say bad things about me on the show. So मैं बस एक ही चीज बोल रहा हूँ, dude. अगर तुम्हारा कनेक्शन के अगेंस्ट ही तुम्हें जाके फाइट करना है बाहर जाने के बाद, then I don't want to be a part of this, ना. So I think an apology is expected rather than me trying to figure out what is happening. So this responsibility does not come on me. It comes on everyone else. What's up, people? अरे सब लोग आ रहे हैं. What's up? Hi, Kushi. Samyukta also said something cool. I couldn't read it. Sorry, Samyukta. There's so many people messaging. I don't know how this live works. अरुणाचल प्रदेश कब आओगे? तुम लोग बुलाओ, मैं आ जाऊंगा. Why will I not come? Ouch, guys, stop hating on everyone else. आने दो ना सबको. We want Kyra and Ron. Kyra's very sweet. She's an adorable person. Kyra's actually quite nice, huh? And I thought quite sensible as well. Among all the girls, that Kyra was quite sensible. Kyra से at least बात कर सकते थे ये expectation के साथ कि बाद में she will not come and backstab you. That much I can tell you. Kyra was very respectful that way. Spoilers दे दो. Have you not seen? बाकी के contestants सब spoilers दे रहे हैं. Mostly 80% of the show उन्होंने लीक किया है. अभी बैठ के मैं भी spoiler दे दूंगा ना, then there's no point. I've come live after a long time, so I don't want to make this the last live I have. What is your biggest red flag? I don't know, guys. मेरे को पता नहीं है red flag, green flag चीजें. मैं बस करता हूँ जो मेरे personality के हिसाब से करता. Whatever I think I do, that's it. I don't. तुम लोगों को क्या लगता है that I wake up every single day and think कि oh wow okay मैं green flag हूँ, अभी देखते हैं मैं क्या करूँगा. I love all the edits, guys. Thank you so much. Very sweet of you all. Dance, please. No, I'm not gonna dance. I'm not gonna come on live and dance. नच्चा नहीं आता, ना. पैसा भेजोगे तो maybe I might dance. I feel like I'm saying a lot of biggest red flag. He loves others more than he loves himself. Oh my God, you're such a darling. Why are you being so supportive? Thank you. Yeah, my hands are also cold. I'm sweating a lot, guys. मेरे को बहुत nervous लगता है ये सब चीजें. हाँ, yes, I have a tendency to consider others more than I consider myself. But ये चीजें मुझे मम्मी पापा ने सिखाया है, guys. This is called having good manners, है ना? What is the one thing that they tell you when you're in school? They say only one thing. Make sure you live your life without causing hindrance to others. So I'm not causing hindrance to others. Red flag बुलाओ, green flag बुलाओ, purple flag हूँ मैं. बुलाओ. I have no problem. I have no problem with whatever flag you want me to call, whatever flag you guys want to call me. It doesn't make much of a difference in my life. You know? Yeah, Jashwant is here. I saw. Hi, Jashwant. What are you guys? Why are you guys on my live? तुम लोगों का काम नहीं है क्या करने के लिए? आ जाओ घर ही आ जाओ फिर. Doing great, Ron. Thanks, man. I hope you're proud of me. I'm trying something. By the way, all these people are the ones who keep forcing me to go live also. So, the reason I'm here is because of my friends, guys.